So these are the edible parts of some fruits. These are the few examples of the plant name and the type of fruit and its edible part. Now we'll move to the seed. All of you know that after fertilization, the ovary becomes fruit and the ovules inside the ovary, that will become seeds. And inside the seed, the fertilized egg, that is zygote, will become embryo. And due to double fertilization and triple fusion, the endosperms are also, the triploid endosperms of angiosperms also present inside the seed. So inside the seed, the embryo and endosperms both are present, and seed is covered by seed coat. So ओव्यूल्स में जो इंटेगुमेंट्स था, आउटर और इनर इंटेगुमेंट, दो इंटेगुमेंट था, वो एक्चुअली सीड कोट बन गया है. ओके, सो वी स्टार्ट विद द सीड. So seed is the product of the fertilization. So you can follow NCERT 76 nowadays. The ovules after fertilization. So after fertilization, ovules converted into seeds. Or ovules develop into seeds. So you can mark here in this diagram. Suppose this is the carpel, stigma, style and ovary. Stigma, style and ovary. Inside it the ovules are present. The ovules. So after fertilization, when the pollen grain falls here, and there is the development of the pollen tube, and with two male gametes. So this pollen tube enters inside this ovule, and the fertilization takes place. So after fertilization, this ovary wall or ovary, it will be converted to fruit, and these ovules converted to seeds. So inside these seeds, these ovules have two integuments. So the seeds have two seed coats. Because the integument, two integuments will be converted to two seed coats, and inside it, the egg is fertilized by the male gamete. So that will give the zygote, and zygote will develop into a embryo. This is the embryo. And around the embryo, the endosperm tissue is present. All of you know, in the plant kingdom, there is the presence of the two central nuclei inside the central cell of embryo sac. The embryo sac is the female gametophyte inside the ovule, and inside that embryo sac, the two central nuclei are present in the central cell. That will be fertilized by another male gamete, because here are two male gametes. One male gamete will fuse with the egg, other male gamete will be fusing with the two central nuclei or two polar nuclei. So the male gamete which fuses with the egg, that will give zygote and hence embryo. And the other male gamete that fuses with the central nuclei, that will give triploid endosperm. So inside the seed, the embryo and endosperm are present, and seed is covered by two seed coats. Okay. So after fertilization, ovules develop into seeds. So seed actually कौन सा पार्ट सीड बना है? ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद सीड बना है, इसलिए सीड को हम क्या बोल सकते हैं? We can call it as ripened ovule or fertilized ovule. So seed can be called as ripened ovule or fertilized ovule. ओके, ripened और fertilized ovule. और सीड के अंदर क्या है?
embryo है, and embryo will give rise to a plant. So embryo can be called as a miniature plant. So seed contains embryo, which is a miniature plant. An embryo is the miniature plant. A seed is covered by two seed coats. As you know that two integuments of ovule that will be giving the seed coats. So seed covered by seed coats. And here the seed coats are two types. One is the outer seed coat, because the outer integument will give the outer seed coat, and inner integument will give the inner seed coats. So seed coats, the name of the seed coats are there. Outer seed coat is known as testa, and inner is known as tegmen. The testa is outer thick seed coat, but the tegmen is thin and inner seed coat. So testa is outer hard thick seed coat. This is outer hard, thick or tough, and whereas tegmen is inner thin. Inner thin seed coat is known as tegmen. So two seed coats are present. One is testa, another is tegmen. So tegmen is inner and thin. So two seed coats are present in the seed. So seed is covered by two seed coats, and inside the seed the embryo are present. और वहां पर जो ओव्यूल था, वहां पर माइक्रोपाइल था, राफे था, हिलम था. आप अगर स्टडी करेंगे, देखो ये एम्ब्रियो साइट है, इसके अंदर एक था, सिनर्जी था, और ये एंटीपोडल सेल था, और इसमें दो सेंट्रल न्यूक्ली था. और आप देखेंगे ये इंटेगुमेंट है, जो मैं डायग्राम कर रहा हूं, आप मार्क कीजिए. This diagram is, yes, and mark. So this is a complete structure of ovule, and this portion, the shaded portion, you just mark here. यही चीज, ये जो ओव्यूल है ना, ये एक्चुअली सीड बन जाता है. So you just mark this shaded region are the integuments. Two integuments are there. ओके. और इसके चारों तरफ ये जो एम्ब्रियो साइट है, फीमेल गैमेट, इसके चारों तरफ न्यूसेलस टिश्यू होगा. ओके. और ये है अनाट्रोपोस ओव्यूल, क्योंकि यहाँ पर जो ये ओव्यूल का बॉडी है और इसका स्टॉक है. तो सपोज ये मेरा हाथ देख लीजिए, ये स्टॉक है और ये जो पाम है ये सपोज ओव्यूल का बॉडी. तो ये 180 डिग्री टर्न हुआ है. तो दिस स्टॉक, ये स्टॉक है और ओव्यूल का बॉडी स्टॉक के साथ 180 डिग्री टर्न है. तो ये जो आउटर इंटेगुमेंट है, ये जो स्टॉक है, फ्यूनिकुलस इसका नाम है, ये इसके साथ फ्यूज हो गया. तो फ्यूज है तो यहाँ पर एक फोल्डिंग आ गया, ग्रीज आ गया. दिस इज कॉल्ड राफे. दिस वन इज कॉल्ड राफे. एंड द स्टॉक के साथ बॉडी जहां पर अटैच हुआ है, दिस वन इज कॉल्ड हिलम. दिस इज कॉल्ड हिलम and this is called raphe. और ये फ्यूनिकुलस है, स्टॉक है, फ्यूनिकुलस. और आप देखिए, दिस इज द टिप ऑफ द ओव्यूल और दिस इज द बेस ऑफ द ओव्यूल. क्योंकि ऐसा है ना, ऐसा अगर हम इसको खड़ा कर देंगे, सीधा कर देंगे, तो ऐसा हो जाएगा. तो ये स्टॉक है और ये बॉडी है. तो ये बेस है और ये टिप है. ये घूम गया है ऐसे नीचे, इससे टिप नीचे आ गया और बेस ऊपर हो गया. लेकिन अगर हम सीधा कर देंगे तो बेस नीचे रहेगा, टिप ऊपर रहेगा. तो इसके हिसाब से ये टिप है और ये बेस है. तो बेस जो है ओव्यूल का बॉडी का, ये स्टॉक के साथ बॉडी अटैच है ना हिलम में, तो ओव्यूल का जो बॉडी का बेस है, इसको हम बोलते हैं चलाजा. और इसका जो टिप है अपेक्स, यहाँ पर एक ओपनिंग है, क्योंकि ये इंटेगुमेंट जो है, आप मार्क कर लीजिएगा, ये जो दो इंटेगुमेंट है वो चलाजा से शुरू हुआ है और इससे
कवर किया है ओव्यूल को, लेकिन यहाँ पर फ्यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर एक रास्ता छोड़ दिया है। तो दिस पैसेज नोन एज माइक्रोपाइल, इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल। ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन के समय में क्या होता है, जो पॉलन ट्यूब आता है वो ऐसा के माइक्रोपाइल के अंदर घुसता है और एम्ब्रियो साक है, दिस इज एम्ब्रियो सैक। इसके अंदर ये एग है और ये सेंट्रल न्यूक्लियस या एंटीपोडल सेल है। सो द पॉलन ट्यूब जैसे इसके अंदर एंट्री करेगा, वन मेल गैमेट इस एग को फ्यूज करेगा, दूसरा मेल गैमेट ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस ना इसको फ्यूज करेगा, क्योंकि ये टोटल ओव्यूल 2n स्ट्रक्चर है, लेकिन ये एम्ब्रियो सैक एंड स्ट्रक्चर है, क्योंकि एम्ब्रियो सैक मेगास्पोर से डेवलप होता है। मेयोसिस के कारण मेगास्पोर होता है और मेगास्पोर डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक में देखो ये जो सेल है ना, ये एक बड़ा सेल है, देखो ये बड़ा सेल के अंदर ये सेंट्रल सेल है, बड़ा सेल के अंदर ये सब छोटे छोटे सेल है। तो ये बड़ा सेल है और ये एग है, सिनर्जिक भी सेल है, एंटीपोडल सेल है, और बड़ा सेल का जो न्यूक्लियस दो है, सेंट्रल न्यूक्लियस, उसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज होगा, एक के साथ दूसरा, क्योंकि एक एन है, मेल गैमेट भी एन, तो 2n वाला जाइगोट होगा और एम्ब्रियो बनेगा। जो सेंट्रल न्यूक्लियस ये एन एंड एन, इसके साथ और एक एन मेल गैमेट फ्यूज हुआ, तो 3n वाला प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा। उसके बाद वो सेंट्रल सेल को लेके वो बन जाएगा एंडोस्पर्म। तो ये टोटल चीज जो है ओव्यूल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट विल बिकम सीड। तो ओव्यूल में माइक्रोपाइल है तो सीड में भी माइक्रोपाइल रहेगा, ओव्यूल में हिलम है वहां पर भी हिलम रहेगा। इफ यू कैन स्टडी द डायग्राम of the NCERT in the page number 77, you can mark there is presence of hilum, there is presence of micropyle. जो हिलम था ओव्यूल में वो भी सीड के साथ रहेगा, क्योंकि हिलम इज द पॉइंट, इसमें स्टॉक एंड बॉडी अटैच होता है। तो जो फल होता है, क्योंकि दिस ओव्यूल इज प्रेजेंट इनसाइड द ओवरी, ओवरी फ्रूट बन जाएगा ना फर्टिलाइजेशन के बाद, तो ओवरी फल बन जाएगा, फल के अंदर ओव्यूल सीड होकर रहेगा। तो सीड का जो स्टॉक है वो फल के साथ अटैच हो जाएगा, वही स्टॉक है फ्यूनिकुलस। ठीक है। तो हिलम भी रहेगा सीड में, और ये ओपनिंग जो है माइक्रोपाइल भी रहेगा, क्योंकि ये ओपनिंग और सीड में नहीं रहेगा तो सीड वाटर नहीं ले सकेगा, ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए माइक्रोपाइल जो ओव्यूल में है दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द सीड। तो तीन चीज एक्चुअली ओव्यूल का, तीन चीज सीड में प्रेजेंट होता है। So three things are present in the seed: micropyle, hilum and rachis. देखिए ये माइक्रोपाइल है, ये हिलम है, और ये जो रिज है ये राफे, दीज आर प्रेजेंट इन सीड। सो माइक्रोपाइल, हिलम एंड राफे प्रेजेंट, तीन चीज प्रेजेंट है। सो माइक्रोपाइल ओपनिंग है, माइक्रोपाइल जब इज फाइन पोर, ये माइक्रोपाइल है फाइन पोर, जो यहां पर भी एक ओपनिंग है वही सीड में भी रहेगा पोर जैसा, और हिलम ये पोर के थ्रू में क्या होगा, ऑक्सीजन एंड वाटर एंट्री करेगा, एब्जॉर्ब करेगा वो। और हिलम क्या है, स्कैल्प स्पॉट रहेगा, स्कैल्प टू व्हिच स्टॉक अटैच्ड। हिलम में ये स्टॉक बॉडी से अटैच होगा, तो वो भी सीड के समय जब ये बॉडी सीड बन जाएगा ना, उसका स्टॉक भी हिलम के साथ अटैच होकर रहेगा। तो वो एक पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्टॉक, और स्कैल्प टू व्हिच स्टॉक अटैच्ड, स्कैल्प टू व्हिच स्टॉक अटैच्ड। ओके। और जो रैफे है वो एक फोल्डिंग टाइप का है रैफे, और रैफे आपको मालूम है ना, ये रैफे ये पर्टिकुलर दिस टाइप ऑफ ओव्यूल इज नोन एज एनाट्रोपोस ओव्यूल, और एनाट्रोपोस ओव्यूल में ही वो 180 डिग्री टर्न होता है।
बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू स्टॉक। तो टर्न होगा तभी जाके ये जो आउटर इंटेगमेंट फ्यूनिकुलस के साथ फ्यूज होकर ये राफे निकलेगा। सो राफे इज ओनली फाउंड इन अनैक्टोपोसोल, नॉट इन एनी अदर टाइप ऑफ ओव्यूल। Only present in anatropous ovule. Raphe only present in anatropous ovule. So ये क्या है? Part of funiculus fused with ovule. Ovule मतलब integument. So funiculus का जो हिस्सा integument के साथ fuse हुआ है, that is called raphe. So part of funiculus fused with seed coat. यहाँ पर तो इंटेगमेंट है, तो इंटेगमेंट एक्चुअली क्या होता है, सीड में सीड कोट बन जाता है। तो सीड कोट के साथ ये जो स्टॉक या फ्यूनिकुलस अटैच होगा, फ्यूज होगा, उसी को हम राफे बोलते हैं। सो पार्ट ऑफ फ्यूनिकुलस फ्यूज्ड विद सीड कोट। ओके, तो ये तीन चीज भी सीड में प्रेजेंट है। सो माइक्रोबाइल का और एक काम क्या है, जब सीड जर्मिनेशन के टाइम में, जब जर्मिनेशन के टाइम आएगा, सीड ऑब्जर्व करेगा मॉइस्चर या वाटर या ऑक्सीजन एंड थ्रू दिस माइक्रोबाइल ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। सो माइक्रोबाइल फैसिलिटेट एंट्री। क्या चीज एंट्री करेगा? सो माइक्रोबाइल फैसिलिटेट एंट्री ऑफ O2 एंड वाटर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। Okay. So a seed is made up of seed coat and embryo. ये NCERT वाला पॉइंट है, NCERT पॉइंट। A seed is made up of, NCERT का पॉइंट है। जो सीड में एक्चुअली क्या होता है, सीड इज मेड अप ऑफ a seed coat and an embryo. A seed coat, एक्चुअली दो सीड कोट होता है, इसलिए ए सीड कोट लिखा है, लेकिन दो होता है। एन एम्ब्रियो, सीड कोट होता है, ए सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो में क्या है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है एंड कॉटिलेडॉन है। एम्ब्रियो हैज embryonal axis
प्लस कॉटिलेडन। कॉटिलेडन 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। सो हम ये ब्रैकेट में एस लिख देंगे, 1 और 2 कॉटिलेडन। 1 भी हो सकता है, मोनोकॉट में 1, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन। और जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है इसका नाम है टाइगेलम। इसका एक बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है, द एम्ब्रियोनल एक्सिस इज कॉल्ड एज टाइगेलम। सो एम्ब्रियो हैज एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 और 2 कॉटिलेडन। सो मोनोकॉट में 1 कॉटिलेडन होता है, डाइकॉट में 2 कॉटिलेडन होता है। इसकी एनसीईआरटी में यू कैन फॉलो द पेज नंबर 76 में शीट के फर्स्ट पैराग्राफ में एग्जांपल दिया है। सो 1 कॉटिलेडन इन मोनोकॉट, in monocots, that is rice and maize इसका एग्जाम्पल है। एंड 2 cotyledon in dicots, जो कि पी फैमिली का है। ग्राम है, ग्राम मतलब चना, एंड पी मतलब मटर। तो डाइकॉट प्लांट में 2 cotyledon होता है और मोनोकॉट प्लांट में सिंगल cotyledon होता है। ठीक है, वहां पर देखो इंसेक्ट लिखा है एम्ब्रियो हैज रेडिकल। रेडिकल एक टर्म दिया है, रेडिकल एंड एम्ब्रियो एक्सिस एंड कॉटिलेडन लिखा है। रेडिकल लिखा है, एम्ब्रियो में क्या है लिखा है, रेडिकल लिखा है, एम्ब्रियो एक्सिस लिखा है और कॉटिलेडन लिखा है, 1 या 2 कॉटिलेडन। लेकिन एक्चुअली रेडिकल इज अ पार्ट ऑफ दिस एम्ब्रियो एक्सिस। रेडिकल इज नथिंग बट सेपरेट फ्रॉम एम्ब्रियो एक्सिस। तो वहां पर जो लिखा है रेडिकल एंड एम्ब्रियो एक्सिस, वो एक्चुअली एक ही है। रेडिकल इज ए पार्ट ऑफ एम्ब्रियो एक्सिस। तो अगर हम इसको थोड़ा और डिटेल जाएंगे, एम्ब्रियो एक्सिस में क्या चीज है आप वहां पर देख पाएंगे। उसका 2 टिप है, एक है शूट टिप एंड दूसरा रूट टिप। वहां से शूट निकलता है, दैट इज कॉल्ड प्यूमुल, एंड जहां से रूट निकलता है, रूट टिप, दैट इज कॉल्ड रेडिकल। ओके, सो जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसको हम टाइगेलम बोलते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसका टर्मिनोलॉजी है टाइगेलम। इसका 2 पार्ट है, एक है प्ल्यूमुल और दूसरा है रेडिकल। So plumule gives rise to, plumule जो है that gives rise to shoot and the radical gives rise to root. So present at the tip of embryonal axis. And gives shoot, shoot system. Present at the lowermost end of embryonal axis and gives root. अब देख लीजिए, सपोज ये एक एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिस इज द प्ल्यूमल एंड दिस इज द रेडिकल, एंड ये 2 कॉटिलेडन है, ये 2 कॉटिलेडन, और इस ये सीड कोट के अंदर होता है, दिस इज सीड कोट, और ये टोटल एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो मतलब ओनली एक्सिस नहीं है, एम्ब्रियो एक्सिस प्लस कॉटिलेडन इज एम्ब्रियो। सो दिस इज द प्ल्यूमल पॉइंट एंड दिस इज द रेडिकल पॉइंट। ये जब सीड जर्मिनेशन होगा, दिस प्ल्यूमल पॉइंट विल गिव द शूट एंड दिस रेडिकल पॉइंट विल गिव द रूट। सो दिस इज प्ल्यूमल एंड दिस इज रेडिकल, एंड ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस इज टाइगेलम या एम्ब्रियोनल एक्सिस।
So embryonal axis is phloem, two parts, plumule and radicle. This is plumule and this is radicle, and this entire axis is called embryonal axis or phloem. So now we go to the structure of the dicot seeds and the structure of the monocot seeds. So we'll start with, now we'll start with the structure of a dicotyledonous seed. So जो डाइकोट प्लांट होता है जिसका दो कटलेट होता है उसका सीड का स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है? So outermost covering of the seed is seed coat, already we have told you. So now we'll go to the NCERT points. You can follow the NCERT points of the page number 76, structure of a dicotyledonous seed. Okay? Outermost covering of the seed is seed coat. So outermost covering of the seed is seed coat. Seed coat is the outermost covering. As I told you, that is testa and tegmen. Outer testa and inner tegmen. That is outer testa and inner tegmen. Already I told you about the hilum, the scare. That is also written here. Hilum is a scare on the seed coat. हिलम जो कि जो स्टॉक है वो भी उनका वो कनेक्ट होता है बॉडी के साथ, वो हिलम है. सो हिलम एक स्कैर है. यू जस्ट फॉलो द एनसीईआरटी पॉइंट्स. हिलम स्कैर ऑन द सीड कोट. एक स्पॉट होता है सीड कोट में, स्कैर ऑन द सीड कोट. और इसके ये जो स्कैर होता है थ्रू व्हिच द डेवलपिंग सीड्स अटैच टू द fruit, through which the developing seed attached to fruit. So as I already told you, the hilum is the point by which the stalk is attached to the body of the ovule. तो hilum point में ही जो सीड होता है, वो जो डेवलपिंग सीड होता है जो कि फ्रूट के अंदर डेवलप होता है, वो फ्रूट के वॉल के साथ अटैच होता है. सो थ्रू व्हिच द डेवलपिंग सीड अटैच्ड टू द फ्रूट. और हिलम के ऊपर में माइक्रोपाइल है. एज यू ऑब्जर्व इन द डायग्राम, एबव द हिलम, वो बिलो नहीं है क्योंकि सीड का वो टिप है. टिप है तो वो एबव द हिलम ए स्मॉल पोर इज प्रेजेंट कॉल्ड micropyle. So above hilum, small pore is called micropyle. जो माइक्रोपाइल जो पोर होता है, जब जर्मिनेशन होता है माइक्रोपाइल के थ्रू में ऑक्सीजन एंड वाटर एंटर करता है, ओके, सीड के अंदर. ठीक है? आप अगर देखेंगे 77 नंबर डायग्राम, इफ यू ऑब्जर्व, जो ग्राम सीड दिया है, दैट इज ग्राम सीड ऐसा दिया है, तो यहां पर ये हिलम है, दिस इज हिलम एंड ये माइक्रोपाइल है. तो दिस इज हिलम दिया है और ये है माइक्रोपाइल. तो आप इसको बिलो नहीं बोलेंगे, तो हिलम के नीचे नहीं है क्योंकि
ये बेस ऑफ द सीड, ये टिप ऑफ द सीड, तो ये एबव है। डायग्राम में बिलो दिखाई दे रहा है, लेकिन द माइक्रोपाइल इज एबव द हिलॉन। ठीक है। और इनसाइड द सीड, एज आई टोल्ड यू, सीड कोट के अंदर क्या चीज है? एम्ब्रियोनल एक्सिस से जो टाइकोलोम है, एंड यहाँ 2 सीड कोट है, क्योंकि ये डाइकोटिलेडोनस प्लांट का सीड है ना, तो ये डाइकोट प्लांट है, तो इसलिए इसमें 2 सीड कोट्स होता है। 2 सीड कोट्स आर प्रेजेंट, सॉरी 2 कॉटिलेडॉन्स आर प्रेजेंट। 2 सीड कोट्स भी प्रेजेंट है और 2 कॉटिलेडॉन्स भी प्रेजेंट है। फॉलो द इनसाइड लाइन, विद इन द सीड कोट एम्ब्रियो इज प्रेजेंट। विद इन द सीड कोट, तो सीड कोट क्या है? टेस्टान टेगमेंट, 2 सीड कोट है। So within the seed coat, embryonal axis is present, यानी कि embryo present है। Embryo is present, which consists of embryonal axis and 2 cotyledons. Embryo present, an embryo consists of embryonal axis. Embryo consists of embryonal axis, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइगोलोम एंड 2 कॉटिलेडॉन्स, क्योंकि डाइकोट सीड है इसलिए इसमें एम्ब्रियो में 2 कॉटिलेडॉन होता है। एम्ब्रियोनल एक्सिस है और 2 कॉटिलेडॉन है। तो कॉटिलेडॉन्स, यहां पर कुछ सीड ऐसे है डाइकोट सीड जिसमें कॉटिलेडॉन स्टोर करता है फूड मटेरियल, सो कॉटिलेडॉन बिकम फ्लेशी। लेकिन हमेशा नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है सीड के अंदर क्या होता है? एंडोस्पर्म होती है, तो एंडोस्पर्म इज ऑल्सो ए न्यूट्रिटिव टिश्यू। अगर एंडोस्पर्म अच्छे से डेवलप होगा तो कॉटिलेडॉन इतना अच्छे से डेवलप नहीं होगा। अगर एंडोस्पर्म थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी तो कॉटिलेडॉन अच्छे से डेवलप होगा। ठीक है। सो कॉटिलेडॉन्स आर ऑफन फ्लेशी, हमेशा नहीं है। सो कॉटिलेडॉन्स इनसेटिलाइड है, कॉटिलेडॉन्स ऑफन फ्लेशी। सो कभी कभी है फ्लेशी होता है। और किस केस में ये एक्चुअली फ्लेशी होगा? जब एंडोस्पर्म रिड्यूस हो जाए, तो ऑफन फ्लेशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। ओके, often fleshy and full of reserve food materials. और 2 एंड में एम्ब्रियोनल एक्सिस के आगे टोल्ड यू 2 एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक एंड में जो टिप होता है ऊपर की तरफ, अपर मोस्ट एंड दैट इज हैविंग प्ल्यूमल एंड द लोअर मोस्ट एंड इज हैविंग रेडिकल, एंड प्ल्यूमल विल गिव राइज टू शूट और शूट सिस्टम, एंड द रेडिकल विल गिव राइज टू रूट और रूट सिस्टम। ओके, सो इसमें क्या होता है? तो देख लीजिए, the 2 ends of embryonal axis, at the 2 ends, of the embryonal axis क्या प्रेजेंट है? प्ल्यूमल प्रेजेंट है एंड रेडिकल प्रेजेंट है। Radical and pleumal are present. Already these things have been told. Radical and pleumal are present. और जो radical है, ये radical will give the root. Radical lower most end में होता है, and radical give rise to root part of the plant, and pleumal uppermost end में होता है, that will give rise to shoot of the plant. ठीक है? So based on the presence of endosperm, आपको मालूम है एंडोस्पर्म are triploid structure in the angiosperms. The flowering plants जो है angiosperms है, यहाँ पर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, 3 एंड है, क्योंकि दिस इज द रिजल्ट ऑफ ट्रिपल फ्यूजन.
So endosperm एक nutritive tissue है that provides the nutrition to the growing embryo. So based on the presence or absence of endosperm in the mature seed, जब सीड मैच्योर होते हुए जाएगा तो ग्रोइंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को कंज्यूम करते हुए जाएगा, एंडोस्पर्म को वो कंज्यूम कर लेगा. तो मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म कंप्लीटली नहीं रहेगा, लेकिन कुछ केस में एंडोस्पर्म कंज्यूम होते हुए भी कुछ पार्ट उसका रह जाएगा. तो बेस्ड ऑन दैट, based on the presence of endosperm in the mature seed. So based on the presence of endosperm in mature seed. So seeds जो है इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक है एंडोस्पर्मिक सीड और उसको बोलते हैं अल्बुमिनस सीड. एंडोस्पर्मिक या अल्बुमिनस सीड्स, और दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स अल्बुमिनस. एक्स अल्बुमिनस सीड्स, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स और एक्स अल्बुमिनस सीड्स. ओके, endosperm is present in mature seed even after consumed by embryo. एम्ब्रियो कंज्यूम करने के बाद भी कुछ एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में रह जाता है. दैट इज कॉल्ड एंडोस्पर्मिक और albuminous seed. और इसका जो एग्जाम्पल है, इन मोस्ट मोनोकॉट्स एंड फ्यू डाइकॉट्स, क्योंकि मैक्सिमम मोनोकॉट के कैरेक्टर है. एंडोस्पर्मिक सीड आर मोस्टली मोनोकॉट कैरेक्टर. और यहां पर जो मोस्ट मोनोकॉट्स है इसमें सीरियल्स होता है. सीरियल्स इसका एग्जांपल है, जैसे कि मेज, राइस, व्हीट, मेज, बार्ली, ये सब मोनोकॉट है. सो मैक्सिमम मोनोकॉट में एंडोस्पर्म रहता है. और कुछ डाइकॉट्स होता है, फ्यू डाइकॉट्स. फ्यू डाइकॉट्स का भी हम एग्जांपल दे देंगे, जिसमें क्या आएगा, कैस्टर. कैस्टर आपको मालूम है, जड़ा गछ जो कि हम जड़ा तेल ये बाहर ताको हम ओडिया रे कहूछु जड़ा तेल बा जड़ा गछ ता सीड रु जड़ा तेल बाहर. एंड कैस्टर, देन पपाया, इसका मतलब पपीता, कॉटन, ये सब डाइकॉट का एंडोस्पर्मिक सीड है. दीज आर एंडोस्पर्मिक सीड ऑफ डाइकॉट्स. इन डाइकॉट में फ्यू होता है, मैक्सिमम मोनोकॉट्स में होता है. ये होता है एंडोस्पर्मिक सीड. सो नॉन एंडोस्पर्मिक क्या है, ठीक है. एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड. एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड्स. दैट मीन completely consumed by embryo. मैच्योर सीड में नहीं होता है,
इसलिए कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय एम्ब्रियो। तो इसका एग्जांपल मोस्ट डाइकॉट्स, जस्ट इसका अपोजिट है, एंड सम मोनोकॉट्स। मोस्ट डाइकॉट्स एंड सम मोनोकॉट्स। डाइकॉट में ये एक्चुअली पी फैमिली में दिखाई देगा, लेग्यूम फैमिली, ठीक है। लेग्यूम फैमिली जो बीन, ग्राम, पी होता है ना, वो लेग्यूम्स होता है। मोस्ट डाइकॉट्स में क्या आएगा? लेग्यूम्स। लेग्यूम्स में क्या आएगा? पी, बीन, ग्राम, ग्राम मतलब चना, बीन, पी मतलब मटर। सो पी, बीन, ग्राम ये सब लेग्यूम्स है अंडर फैबासी फैमिली। और कुछ मोनोकॉट है, कुछ मोनोकॉट भी है जो कि नॉन एंडोस्पर्मिक है। ये नॉन एंडोस्पर्मिक सीड है। जैसे सम मोनोकॉट्स में इधर एग्जाम्पल आएगा ऑर्किड्स। ऑर्किड्स मोनोकॉट्स है लेकिन वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, या एक्स एल्बुमिनस सीड्स है, ठीक है। Next we'll go to structure of monocotyledon seed. Structure of a monocotyledon seed, जिसके आप देख सकते हैं डायग्राम में, बुक में मेज सीड दिया है जो मक्का है या कॉर्न, मेज को हम कॉर्न बोल सकते हैं। सो द मेज सीड्स आर द मोनोकॉट सीड्स in which the endosperms are present. Okay. So now we'll go to the structure of monocotyledon seed. Structure of monocotyledon seed. So difference क्या है? देखो सीड के अंदर एम्ब्रियोनल एक्सिस है और कटलेडन है, यहाँ पर भी एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा और कटलेडन होगा। लेकिन डिफरेंस है, डाइकॉट सीड में 2 कटलेडन होता है और मोनोकॉट सीड में सिंगल कटलेडन होता है। सो जनरली और क्या डिफरेंस है? जनरली मोस्टली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्म, उसमें एंडोस्पर्म होता है। देखिए हम प्रीवियस नोट में देखे कि एंडोस्पर्मिक सीड्स आर मोस्टली मोनोकॉट्स, वही एनसीईआरटी पॉइंट में दिया है, फॉलो कर लीजिएगा दो पॉइंट्स। जनरली मोनोकॉट seeds are endospermic. Monocot seeds are endospermic. जिसकी ऑर्किड्स का हम एग्जाम्पल दिए थे वो नॉन एंडोस्पर्मिक है, लेकिन ज्यादातर वो ऑर्किड्स का एक्सेप्शनल केस है, और सम are non-endospermic. Generally endospermic, but some are non-endospermic. और non-endospermic क्या है? ऑलरेडी हम एग्जाम्पल दे चुके हैं, यहां पर भी एनसीईआरटी में लिखा है ऑर्किड्स। Non-endospermic, that is orchids. Orchids are non-endospermic seeds. ठीक है। तो यहां पर अगर हम मेज का एग्जाम्पल लेंगे
मेज जो है ना वो एक्चुअली उसका सीड कोट इज फ्यूज विद द फ्रूट वाल, सो ये सिंगल सीडेड फ्रूट है मेज. ओके, इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स, मेज सीरियल्स है, इन सीरियल सीड्स, एग्जाम्पल अगर हम लेंगे मेज, तो सीरियल सीड्स में क्या होता है, मेज में क्या होता है, सीरियल सीड में सीड कोट बहुत पतला होता है, थिन होता है. सो सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, सीड कोट इज मेम्ब्रेनस, and that seed coat is fused with, seed coat is membranous and fused with cell and fruit wall, and generally हमेशा फ्यूज नहीं होता है, लेकिन जनरली फ्यूज होता है मैक्सिमम केस में. membranous and generally fused with fruit wall, जनरली फ्यूज विथ फ्रूट वाल. ठीक है, और यहां पर जो एंडोस्पर्म है वो, क्योंकि आपको मालूम है कि मैक्सिमम एंडोस्पर्मिक है, मैक्सिमम मोनोकोट एंडोस्पर्मिक, इसका मतलब एंडोस्पर्म अच्छे से उसमें डेवलप होगा. इवन एम्ब्रियो कंज्यूम करने के बाद भी मैच्योर जब सीड होगा तभी भी उसके अंदर एंडोस्पर्म रहेगा. तो एंडोस्पर्म हियर इज मैसिव और बल्की, जो कि फूड स्टोर करता है. ठीक है, एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड. सो एंडोस्पर्म बल्की एंड stores food. Endosperm is bulky and stores food. और आप उसका डायग्राम देखिए, एक एलेरॉन लेयर है, आप देख सकते हैं इसका डायग्राम, ऐसे डायग्राम है. तो यहां पर एक पार्टीशन है, आप देख सकते हैं ना, ये पार्टीशन. तो दिस इज द सिंगल कटिलेडर. इस सिंगल कटलेट को हम क्या बोलते हैं, सिंगल कटलेट को स्क्यूटेलम बोलते हैं. उसका जो कवरिंग है, जो ऊपर में जो एंडोस्पर्म है ना, इसका ये कवरिंग है, इसको बोलते हैं एलेरॉन लेयर. तो दिस पार्ट इज एंडोस्पर्म, और ये जो है सिंगल कटलेट, इसको बोलते हैं स्क्यूटेलम. और यहां पर एम्ब्रियोनल एक्सिस इसके स्क्यूटेलम के नीचे होगा, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस है. You can follow the diagram, inside the diagram. तो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये वाला है. और ये है प्ल्यूमुल, ये है रेडिकल. उसके ऊपर में कुछ कवरिंग है, इसको बोलते हैं कोलियोप्टाइल, और ये कवरिंग को बोलते हैं कोलियोराइजा. तो दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस. एक साइड में एम्ब्रियोनल एक्सिस जो है ना, इसका एक साइड में है. तो प्ल्यूमुल है, कोलियोप्टाइल है, रेडिकल है. ये पॉइंट है प्ल्यूमुल, दिस पॉइंट इज प्ल्यूमुल एंड दिस पॉइंट इज रेडिकल. देखो प्ल्यूमुल एंड रेडिकल पॉइंट वो डाइकॉट में भी होता है, लेकिन ये जो प्ल्यूमुल के ऊपर जो सीट जैसा कवरिंग, कोलियोप्टाइल इसका नाम है, कोलियोप्टाइल. और इसका कवरिंग का नाम है रेडिकल ऊपर, उसका नाम है कोलियोराइजा. ये कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा ओनली मोनोकोट में होता है, ये डाइकोट में नहीं होता है. ठीक है, और इसके जो कवरिंग है, ये कवरिंग जो है, ये इसको हम सीड कोट नहीं बोल सकते. ये सीड कोट एंड फ्रूट वाल फ्यूज है. आपको मालूम है ये फ्रूट है, आप इसको सीड बोलेंगे या फ्रूट बोलेंगे, आपको इसको फ्रूट भी बोल सकते हैं, सीड भी बोल सकते हैं. सिंगल सीडेड फ्रूट, सिंगल सीडेड फ्रूट का ये जो कवरिंग है ना, इसमें फ्रूट वाल के साथ सीड कोट फ्यूज हुआ है. ना इसको आप ओनली सीड कोट बोल सकते हैं, ना इसको ओनली फ्रूट वाल बोल सकते हैं. A seed coat and fruit wall both get fused. This is seed coat and fruit wall.
और ये जो कवरिंग देखो, ये एंडोस्पर्म टिश्यू है, ये तो न्यूट्रिटिव टिश्यू, ये मैच्योर सीड में भी रहता है, एंडोस्पर्मिक सीड है ये। और इसके जो कवरिंग है आप देख सकते हैं, ये एंडोस्पर्म फ्री है नहीं, ये एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है क्योंकि ट्रिपल फ्यूजन का प्रोडक्ट है। और ये जो कवरिंग है आप देख सकते हैं, ये इसको बोलते हैं एलेरोन लेयर। डायग्राम में, बुक में भी आप देख सकते हैं एलेरोन लेयर। दैट एलेरोन लेयर इज नथिंग बट दिस पार्ट इज नोन एज एल्यूरोन layer. This alveolar layer is also thin because this alveolar layer is a part of endosperm. Endosperm का outer layer को ही alveolar layer बोलते हैं. So this is a part of endosperm. That's why alveolar layer is also triploid like endosperm. ठीक है? So ये प्रोटीनस लेयर है, एक लाइन लिखा है एंडोस्पर्म में, and alveolar layer is the outer layer of endosperm which separates the endosperm from एम्ब्रियो पार्ट। तो ये एम्ब्रियो है बेटा, एम्ब्रियो एक्सिस। स्क्यूटुलम क्या है? स्क्यूटुलम है सिंगल कॉटिलेडन, ये सिंगल कॉटिलेडन है, ठीक है। और ये जो एम्ब्रियो एक्सिस है ना, ये प्रीमोलर रेडिकल, इसको मिलाकर एक्सिस बोलते हैं, एम्ब्रियो एक्सिस एंड कॉटिलेडन, ये टोटल दोनों को मिलाकर बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है ना। और एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म को सेपरेट करता है ये वाला लेयर, इसको बोलते हैं एलेरोन लेयर। एक लाइन लिखा है एनसीईआरटी में, आप उसको देख लीजिए। ठीक है। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, एनसीईआरटी पॉइंट है आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म, इसका मतलब एलेरोन लेयर। ये मेज सील का डायग्राम है। सो आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म separates the embryo by a proteinous layer. Outer covering of endosperm separates the embryo by a proteinous layer called aileron layer. और आप मार्क कीजिएगा aileron layer भी ट्रिप्लॉइड है। इंपोर्टेंट पॉइंट है, एंडोस्पर्म में ट्रिप्लॉइड एंड aileron layer इज नथिंग बट, क्या लिखा है यहाँ पर aileron layer के बारे में क्या लिखा है? आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये एंडोस्पर्म का हिस्सा है जो कि एंडोस्पर्म को सेपरेट करता है एम्ब्रियो से। दिस टोटल पार्ट इज एम्ब्रियो, दिस एक्सिस एंड सिंगल कॉटिलेडन, जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। एक्सिस एंड स्क्यूटेलम टोटल इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सेपरेट करता है एंडोस्पर्म को, एम्ब्रियो से एंडोस्पर्म को सेपरेट करता है कौन? इस एलेरोन लेयर। और एम्ब्रियो जो इसका है ये छोटा वाला एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो छोटा है और एक ग्रूव में होता है जो जिसके ऊपर ये एंडोस्पर्म कवरिंग करता है। एम्ब्रियो मतलब मान लीजिएगा ये एम्ब्रियो एक्सिस एंड स्क्यूटेलम दोनों को मिला के एम्ब्रियो बोलते हैं। सो एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड प्रेजेंट इन ए ग्रूव। सो एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड situated in a groove. On one side of endosperm, endosperm के एक साइड में ये सिचुएट है ग्रुप में। At one end of endosperm, एंडोस्पर्म के एक साइड में एंड में एम्ब्रियो छोटा है और ग्रुप में प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें क्या है बेटा?
एम्ब्रियो में क्या है, एक लार्ज सील टाइप का कवरिंग। ये सील एम्ब्रियो में एम्ब्रियोनल एक्सिस है और स्क्यूटेलम है, सिंगल कट लेना है। स्क्यूटेलम एम्ब्रियो के ऊपर एक सील टाइप का कवरिंग है, जिसको हम बोलते हैं स्क्यूटेलम। सो एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ वन लार्ज सील शेप्ड कॉटिलेडन। So embryo has a large sealed shaped one single large seal shaped cotyledon. One large seal shaped cotyledon. इधर हम वन लिख देंगे, वन लार्ज सील shaped cotyledon, सिंगल है वो, called as scutellum। इसका नाम है scutellum। ठीक है, सिंगल कॉटिलेडन को scutellum बोलते हैं। एंड ए शॉर्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस विथ प्लूमुला रेडिकल। सो एम्ब्रियो में, ये एम्ब्रियो का हिस्सा है, एम्ब्रियो में scutellum है एंड ए शॉर्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस, छोटा सा एम्ब्रियोनल एक्सिस है और उसका दो एंड में प्लूमुल एंड रेडिकल है। ठीक है, एक्सिस विथ ए प्लूमुल एंड ए रेडिकल। ठीक है, सो एम्ब्रियोनल एक्सिस छोटा है और प्लूमुल और रेडिकल है। सो प्लूमुल, देखो यहां पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट आएगा जो कि डाइकट में नहीं है। डाइकट में भी एम्ब्रियोनल एक्सिस है, प्लूमुल रेडिकल है, मोनोकॉट में भी है, लेकिन ये जो कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा ये ओनली मोनोकॉट कैरेक्टर है। तो प्लूमुल के ऊपर एक सिथ टाइप का कवरिंग कोलियोप्टाइल और रेडिकल के ऊपर भी एक सिथ टाइप का कवरिंग कोलियोराइजा। So this is the last point of the NCERT book. You can see that point. So the plumule and radicle are enclosed in sheaths. Plumule and radicle are enclosed in sheaths. ये sheaths टाइप का कवरिंग है प्लूमुल के ऊपर और रेडिकल के ऊपर, enclosed sheaths called as कोलियोप्टाइल एंड कोलियोराइजा रेस्पेक्टिवली। प्लूमुल के ऊपर की जो शीथ